Hello students, I hope you all are fine at your homes. So we are going to proceed with the next topic, that is the distance time graph. So in this we will be comparing two quantities, two physical quantities. Basically whenever we plot a graph beta, so we are using two physical quantities and compare that how they vary with each other, that is how they change with the respect to each other. So in this chapter we are studying about distance time, so we are going to discuss that distance time graph. Before proceeding further, we will discuss some of the graphs, that there are two types of graphs जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, whereas different types of graphs और भी हैं. So in this chapter we will discuss about two types. One is bar graphs and other is pie chart. तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द बार ग्राफ. बेटा बार ग्राफ में क्या होता है, दैट वी आर गिवन विद टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. वी ऑलवेज टेक इंडिपेंडेंट जो क्वांटिटीज़ होती हैं विच डू नॉट वेरी विद अदर क्वांटिटी. तो जैसे टाइम है, टाइम जो है सभी के लिए इट इज़ टेकन सेम, तो दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. इट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑफ द क्वांटिटी दैट इज़ सेड टू बी independent quantity is taken along the x-axis, and along the y-axis we take dependent quantity which varies. जैसे distance varies for each and every person, सभी के लिए it is different for different vehicles travel different distances in the particular time. So this is taken along the y-axis. So for that we have taken an example, that is overs and between runs. दो physical quantities we have taken, तो उनको हमने कंपेयर किया है. वी हैव टेकन ओवर्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस बिकॉज इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, बिकॉज ओवर सभी के लिए 6 बॉल्स ही होती हैं, तो दैट इज़ टेकन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. तो द रन्स में वेरी फ्रॉम ओवर टू ओवर है ना, तो वो वेरी होने वाली जो चीज़ है वी हैव टेकन अलॉन्ग द वाई एक्सिस. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जो टेबल है उसके मीन्स दैट इन फर्स्ट ओवर देर आर 5 रन्स. तो बार ग्राफ में बेटा वी प्लॉट द बार्स. अब हम बार्स की शेप में या रेक्टेंगल्स की शेप में वी ड्रॉ इट. नेक्स्ट इन ओवर देर आर 10 रन्स. इन नेक्स्ट थर्ड ओवर अगेन 5 रन्स. सो इन द सेम वे वी प्लॉट ऑल द bars in the bar graph. So this is how we represent it. Next is the pie chart beta. It is in the form of circle, and then this circle is divided into some sectors according to our जो independent quantity है like overs. तो 5 sectors we have taken 5 overs in the table, तो 5 sectors will be there. Sectors are the part of the circle, and accordingly we will give the shape to the sectors, that जितना बड़ा runs more scored, more the size will be of the sector. So in this we represent the data in the form of circle and dividing the circle into different segments, into different sectors. Clear? So this is one is done in front of you using the same table. Clear it is? Next comes how to draw a distance time graph beta. In this also time is an independent quantity that is taken along the x-axis, and जो dependent quantity है that is distance, it can change, so that is along the y-axis, and the point of intersection of the both x-axis and y-axis is taken as, उसको हम क्या लेते हैं बेटा, that is taken as origin. उसको 0 से we start. ठीक है. तो फॉर द फर्स्ट केसेस व्हेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पे होती है बेटा, रेस्ट पे मींस व्हेन इट इज़ नॉट मूविंग, तो इट मींस टाइम के साथ पास होने के साथ साथ वी आर ट्रैवलिंग नो डिस्टेंस. तो उसमें कैसे आएगा प्लॉट हमारा, दैट विल लुक लाइक दिस. हियर यू कैन सी टाइम इज़ इंक्रीजिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज़ रिमेनिंग द सेम. मीन्स बॉडी क्या है, रेस्ट पे है. So this is the distance time graph we get in the case of when the body is at rest, right? And the next you can see when the body is in uniform motion, when it is covering equal distance in equal intervals of time. तो वो कैसा आता है, that is straight line. That let us take an example, 1 second, 2 second, 3 second, and here we have taken 10, 20, 30. तो
if a body is covering with equal distance in equal intervals of time with the speed of 10 meter per second, so in first second it will travel 10 meter, so we will plot out here. In second 1 meter it will again travel 10 meter, right? So this is here. So we will, when we join these points, so we get the straight line. So this is how we get the graph for uniform motion. But इन अनदर केस बेटा, इफ़ अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो ये जो लाइन है इट डू नॉट कम इन द स्ट्रेट फॉर्म, तो वो स्ट्रेट फॉर्म में नहीं आती, राइट। एंड नेक्स्ट इज़ बेटा, इफ़ वी टेक द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन द बॉडी इज़ इनिशियली, वो रेस्ट पे नहीं है, जैसे इनिशियली रेस्ट पे थी तो यहाँ पे हमने ओरिजिन से स्टार्ट, ओ से स्टार्ट किया था, बट इफ़ द बॉडी इज़ नॉट रीजनली एट रेस्ट, तो हम डिस्टेंस कुछ उसका वी टेक इट्स वैल्यू एट ज़ीरो टाइम ऑल्सो, तो उसकी हम वैल्यू लेते हैं व्हेन वी आर कंसिडरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी फॉर अ पार्टिकुलर इंस्टेंट। तो उस टाइम पे हम डिस्टेंस की कोई वैल्यू पहले से ही स्टार्ट करते हैं, तो दैट इज़ नॉट फ्रॉम ज़ीरो। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।